ओके, तो हम लोग आज पाकिस्तान स्टडीज़ को कवर कर रहे हैं। क्लास 10 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। हर चैप्टर के मैंने 30 एमसीक्यूज मार्क करवाए हैं, जो कि आप अगर करेंगे तो पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा उसमें से। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। इसको अब देखते हैं, मार्क करते हैं इसको। ये है क्वेश्चन बैंक मेरे पास, इसमें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 सेक्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो 6 नंबर पर आते हैं हम लोग। नंबर 2 है, विच ऑफ द फैक्टर गिवन बिलो इज नॉट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, क्लाइमेट, वाटर, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। इसमें है नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्रीज का हमारी पॉपुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड है, इन पाकिस्तान द हेल्थ डिपार्टमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फोर्थ है आपके पास, विच लैंग्वेज हैज़ अ वाइटल रोल प्रोड्यूसिंग कोहेजन इन पाकिस्तान। उर्दू हर जगह बोली जाती है। फिफ्थ है, इन विच सेंचुरी ग्रेट डेवलपमेंट इन नज्म टुक प्लेस। तो 19th सेंचुरी में। सिक्स्थ है, हु इज द लार्जेस्ट पोइट ऑफ पश्तो लैंग्वेज। रहमान बाबा या बाबा रहमान, एक ही बात है। सेवंथ है, इन पंजाब पीपल प्रेफर डैश फॉर ड्रिंकिंग लस्सी। 8 है, according to census 1951 literacy rate in Pakistan was about 16%. 19th है, according to the census of 1998 population was 13 crore। sometime हम लोग पढ़ते थे 14 करोड़ है, तो आप लोगों ने बुक में मैच कर लेना कि एग्जैक्ट फिगर क्या लिखा हुआ है। 10th है, द क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान इज एक्सट्रीमली हॉट। 11th है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। तो 54% सिर्फ पंजाब में रहती है। 12 है, इन बलूचिस्तान द एवरेज पॉपुलेशन लिव्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर वाज और 28। 13th है, द फर्स्ट सेंसस इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट वर हेल्ड इन 1981। 14th है, द क्लाइमेट ऑफ आवर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज इज वेरी कोल्ड। 15th है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेटल्ड अराउंड वाटर रिजर्व। 16th है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ 13 and 14 टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 51%। 17th है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 13 and 14 percentage literacy rate in Pakistan is about 60%। 18th है, the education before class 1 is called prep। The secondary education is a course duration in Pakistan is about 2 years। 4, eradication of polio drive was started in 1985। 21st, at the present time there is uniformity in Pakistan in culture। 22, according to modern research, the first Diwan of Urdu language is compiled by Muhammad Qutub Shah। 23rd, the types of major accents in Pakistan Punjabi language are 6। 26, dash has a special position in Punjabi poetry, folk tales। 25th, 150 books in Sindhi and Persian are written by Makhdoom Hashim। 26th, the work of introducing the Balochi poetry began in 1840। 27, the War of Independence was fought in 1857। 28, reserved seat in National Assembly for minorities are 10। And 29, in Kalat, Balochistan and surrounding areas, dashed local language is spoken, Balochi। 30th, the average percentage of population of Islamabad according to census of 1998 is 0.6%। 30th, उसके बाद आपके पास सेक्शन बी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। Number 1, give a brief account of on density of population। Number 2, write a note about education structure in Pakistan। Number 3, when the people of nation live together, what kind of similarity do they have? 4th, write short note on prep and primary education। 5th, explain the concept of inflation। ये पाकिस्तान में आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है। 6th है, write about the popular games of played in Pakistan। 7th है, write a short note on mixed culture। 8 है, what are eradication diseases। 9th है, in which district of Pakistan Hindko language is spoken। 10th है, what is the meaning of culture। 11th है, why Punjabi is known as ancient language। 12th है, elaborate the impact of religion uniformity on our society। 13th है, write a short note on Urdu language। 14th है, what developments took place in the subcontinent during Muslim era। 15th, explain the local means of information।
16th है why illiteracy is considered as major problems of Pakistan. और 17th है which age is known as the golden age of Sindhi poetry. 18th है give a brief note on folk tales. 19 है how social values affect our society. 20th है how Sindhi language developed during British rule. 21st who is Amir Karoor and what is unparalleled asset of Pashto literature. 22 in how many parts Balochi poetry is divided. 23rd where Saraiki language is mainly spoken. 24th write a short note about consensus. तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं. एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ. एलेबोरेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान. व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्क्राइब द रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान, वो ऊपर वाले में कवर हो जाएगा. फिफ्थ एक्सप्लेन द जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स. ये ऊपर कवर हो जाएगा इसमें. डिस्क्राइब द एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान. ये इंपॉर्टेंट है. एजुकेशनल प्रॉब्लम, ये दोनों एक ही में आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए. सजेस्ट सोल्यूशन फॉर द एजुकेशनल प्रॉब्लम. ये तीनों देखें, एक ही क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है. अब आ जाता है हेल्थ कंडीशंस इन पाकिस्तान. इंपॉर्टेंट है. What are the geographical distribution of Pakistan? 11th है describe the commonality in religion, culture leading in national integration. What are the major social problems faced by Pakistan? 13 write a note on gradual development of Urdu. Short note on Sindhi. Elaborate the rights of minorities according to the Constitution of Pakistan. 16 explain the notable characteristics of Pakistani culture and society. ये important है. Discuss the status of minorities in the light of Quaid-e-Azam speech on 11th August 1947. Or write a detailed note on literacy rate in Pakistan. Elaborate the literature and poetry of Pashto. Describe the educational condition in Pakistan. ये इसकी कीज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं, ये आप लोगों को खुद देखने हैं. मैंने MCQs मार्क करवा दिए हैं. शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आपने खुद देखने हैं. लॉन्ग क्वेश्चंस के पेजेस लिखे हुए होंगे कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, वो आपको इजीली मिल जाएंगे. अगर बुक से हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो उनमें आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पहला ये वाला क्वेश्चन. डिस्क्राइब द वर्क इन डिफरेंट पोइट्स, प्रोज एंड राइटर्स. एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइनॉरिटीज, कल्चर एंड सोसाइटी, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स. ये इंपॉर्टेंट है. राइट. ये उर्दू लैंग्वेज वाला भी कभी कभार आया है, लेकिन ये लैंग्वेजेस में कवर हो जाएगा.